Well, ladies and gentlemen, our chief guest for the occasion has just arrived into the auditorium. May I all request you to kindly give him a standing ovation, please. Thank you, sir. None other than our chief guest and Honorable Union Cabinet Minister for Mines, Coal and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi, is here with us. Thank you very much, sir, for kindly accepting our invitation to be a part of this momentous program. Thank you, sir. Well, yeah, may I now request our river dignitaries to kindly grace the dais, please? Our chief guest for the occasion, Shri Prahlad Joshi, our guest of honor who has joined us virtually, Shri Rao Saheb Patil Danve. We have three honorable ministers of geology and mines from three states, Bihar, Madhya Pradesh and Karnataka. And they are also with us, esteemed guests, and they will also be gracing the dais. I also request Secretary Mines, Shri Alok Tandon, to grace the dais, Shri R.S. Garkal, Director General Geological Survey of India, to kindly grace the dais, and also Shri Sanjay Lohia, Additional Secretary, Ministry of Mines, Government of India. Well, Honorable Minister, sirs, other river dignitaries on the dais, senior officers from the echelons of Government of India, invited guests, our representatives from the industry, from state government representatives, our friends from press and media, all participants, invited guests, ladies and gentlemen. Well, the Ministry of Mines, under aegis of Government of India, has for decades been guarding the mineral resources of the country and is also considered the main entity for all mining-related issues in India. It also provides the strategic direction for geoscientific activity and creates better interaction between central agencies and government organizations. The Geological Survey of India, which is an attached office to the Ministry of Mines and the nodal geological organization of the country, has been the vanguard of all major geoexploration activities on either side of dates of independence, and it has continually been striving hard to unleash new mineral finds in the country. In pursuance of that indefatigable approach to contribute to the national economy, GSI, with its systematic investigation, has identified more than 100 reconnaissance survey potential blocks consisting of bulk and non-bulk commodities in various states of India. On this moment, all these blocks will be handed over to respective state governments for the process of auctioning under the provisions laid down in the new MMDR Amendment Act of 2021. Well, ladies and gentlemen, this moment is no less than a ceremony for us, which has to be nurtured not only for the moment, but also in the times to come. We are extremely grateful to all of you for having come here, and we are extremely delighted to have this program in the format that we are having today. It is definitely bound to have very valued returns by the end of it. Well, moving further, may I now request our first speaker to kindly come on the dais for his welcome address. He's none other than Shri Upendra Shri Joshi. He's Joint Secretary in the Ministry of Mines, and he represents the Indian Railway Traffic Service of Civil Services batch of 1989, and has been handling the present portfolio with astute composure and loads of experience behind him. You're welcome, sir. Good afternoon. Namaskar. We all have assembled here to participate in today's very important function regarding handing over of G4 exploration blocks to the state government. On this special occasion, first of all, I welcome our chief guest, Honorable Minister of Mines, Coal and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji. I also welcome Honorable Minister of State of Mines, Coal and Railways, Shri Rao Saheb Patil Danve ji, who is joining us through VC. Other dignitaries on the dais, Honorable Minister of Mines from Karnataka, Sri A. Halappa Basappa ji. Honorable Minister of Mines from Madhya Pradesh, Sri Brijendra Pratap Singh ji. Honorable Minister of Mines from Bihar, Sri Janak Ram ji. Honorable Minister of Mines from Odisha, Sri Prafulla Kumar Malik ji. He is connected through VC. Sri Alok Tandon, Secretary Mines. Sri R.S. Garkal, Director General Geological Survey of India.
and Sri Sanjay Lohia, Additional Secretary Mines. I welcome you all, sir. Off dais, we have with us distinguished dignitaries and senior officers from states, senior officers from central ministries, dignitaries from industries and associations. Also, a large number of participants from various organizations and our stakeholders are all connected with us virtually from across the country. Without naming, I welcome you all in this event. As we know, economic growth of a country is critically dependent on the availability of minerals. It is therefore imperative for us to fully harness the mineral resource potential of the country. In this context, it is worth mentioning that the recent amendments made in the year 2021 in the MMDR Act has led to the simplification of exploration and auction rules, which now enables the mineral blocks to be auctioned as composite license at G4 level of exploration. Also, the amendment has facilitated private sector participation in exploration. In the light of these recent amendments, Geological Survey of India has identified areas with geological potential and developed G4 level reports. Today, a total 100 such reports of the G4 stage mineral blocks will be handed over to the respective state governments by Honorable Minister of Mines. I firmly believe that this occasion marks the turning point for the mineral sector. As large-scale private participation is expected for prospecting and consequent seamless transition to mining after these G4 blocks are put up for auction by the respective states. This, in turn, will result in increased supply of mineral in the country. Before I conclude, I once again welcome you all. Thank you. Well, thank you very much, sir, for that welcome address. And ladies and gentlemen, we'd like to treasure this moment by welcoming our special dignitaries on the dais with plants as a symbol of life. And for the same, may I request the lady officers of Geological Survey of India, Ms. Nayan Jaiswal and Ms. Tanvi Gupta, to kindly come forward and do the honors. देवियों सज्जनों, आपसे निवेदन है कि इस क्षण को हम जिएं और आपकी उपस्थिति से, आपकी करतल ध्वनि से, आपके उत्साह से इसको हम जीवंत बना दें. देवियों सज्जनों, सबसे पहले हम आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय श्री प्रहलाद जोशी, ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर माइंस, coal and parliamentary affairs. He's there with us. We'd like to present a small plant sapling to him. You're welcome, sir. Sir has been a complete support to us, and he has been a source of constant encouragement to us. Virtually with us today is our guest of honor, Shri Rao Sahab Patil Danve, Honorable Union Minister for State in Mines, Coal and Railways. Because of his preoccupation, he could not be here, but he's virtually present here, and we'll get to hear from him. Ladies and gentlemen, we also have Shri Janak Ram, Honorable Minister of State for Geology and Mines from Government of Bihar, and we are so delighted to have his kind presence. We would like to welcome him. Shri A. Halappa Basappa, Honorable Minister of State for Geology and Mines, Government of Karnataka, is also gracing the dais, and we would like to welcome him. Shri Brajendra Pratap Singh, Honorable Minister of State for Geology and Mines, Government of Madhya Pradesh, is also on the dais. We would like to extend a very hearty welcome to him. Ladies and gentlemen, may we also inform that we are also joined by Minister of State for Geology and Mines, Government of Orissa, who also joins us virtually, Shri Prafulla Kumar Malik. You're welcome, sir. We would also like to welcome Shri Alok Tandon, Secretary Minister of Mines to the Government of India, gracing the dais. You're welcome, sir. We would like to extend our hearty welcome to Shri Rajendra Singh Garkhal, Director General, Geological Survey of India. And finally, we would also like to welcome Shri Sanjay Lohia, Additional Secretary to the Ministry of Mines, Government of India. Thank you for gracing this occasion, sir.
Well, ladies and gentlemen, we now have the pleasure of lending our ears to someone at the helm of affairs in Ministry of Mines. He's diligently handling very critical, crucial, and sensitive responsibilities and translating the vision of governance into reality through mature and professional administration. Representing the 1986 batch of Indian Administrative Service, he has now over 34 years of enriching experience, having also served as Joint Secretary and Additional Secretary to the Ministry of Finance, and with over 4 years of heading as CMD of a public sector organization in the power sector. With an impeccable track record of envisioning, strategizing, and implementing plans for operational and financial turnarounds, his experience in long-term project management, resource management, and negotiations with regulatory bodies sees him in his present portfolio as Secretary, Ministry of Mines, as a very experienced bureaucrat. Ladies and gentlemen, can we put our hands together and welcome Shri Alok Tandon, Secretary Mines, for his kind address. Honorable Minister of Mines, Coal and Parliamentary Affairs, Honorable Minister of State for Mines, Coal and Railways, Honorable Ministers of Mines from the states of Karnataka, Madhya Pradesh, Bihar and Orissa, Director General GSI, my colleagues from the ministry and other colleagues from the various central ministries, dignitaries from the state government, representatives from industry associations, ladies and gentlemen. Mining is one of the core sectors that drive growth in an economy. Not only does it contribute to GDP, it also acts as a catalyst for growth of other core industries like power, steel, and cement, which in turn are critical for overall development of the economy. Further, it is an important vehicle of employment. India is blessed with immense potential of natural resources. However, the rate of mineral deposit discovery has fallen and is now stands at about 1 mineable discovery from 100 to 1000 exploration programs, depending upon the type of commodity and nature of deposit. Deposit with surface manifestations as well as near surface indications have more or less been exhausted, and the challenge is now to target the concealed and deep-seated deposits, the target to discovery ratio of which is very low. In this scenario, and given the size of the country and complexity of its geological terrain, exploration programs need to be more extensive as well as technologically intensive. Exploration in the modern world deploys state-of-the-art technology which enables quick scanning of terrains for possible targets. To meet the challenges, opening up of exploration for private enterprise is vital for comprehensive exploration in the country. The amendments to the MMDR Act and the mineral auction rules and reorganization of NMET made in 2021 are all directed towards this end. GSI has acquired state-of-the-art baseline geoscience data and disseminating the same through an online geospatial platform, which is vital for mineral targeting. This online data sharing platform is at par with the best in the world. Geological mapping of the entire accessible parts of the country on 1:50,000 scale has been completed. Further, ground gravity and magnetic data over 8 lakh square kilometers and multi-elemental geochemical data over an area of 12 lakh square kilometers have also been acquired. The baseline data of GSI is available in public domain and is a mine of geoscience information lying to be tapped by the public and private exploration agencies for planning and launching the exploration programs. Recently, GSI has accelerated the acquisition of baseline geoscience data over the entire country, which will aid in accelerating these exploration programs. It has also ventured into deep seismic reflection survey and magnetotelluric datasets. GSI has utilized all the baseline and reconnaissance survey data for demarcating 100 G4 potential mine blocks, which will be handed over to the concerned states during this event today. These 100 blocks belong to the state of Madhya Pradesh, 21 in number, Rajasthan, 13 in number, Chhattisgarh, 10 in number, Karnataka, 9, Andhra Pradesh, 9, Maharashtra, 8, Odisha, 7, Tamil Nadu, 7, Jharkhand, 5, Bihar, 5, Uttar Pradesh, 3, Kerala, 2,
Uttarakhand and West Bengal 1 for various mineral commodities. These varying number of blocks in different states indicate varying geological potential for different commodities in different states. Handing over these blocks and further auction process by the state governments will surely bring in investments, intensify exploration, and reverse the decline in mineral deposit discovery. These efforts will facilitate the scope of participation of small as well as big exploration entities by involving them right from the very initial stage of exploration. Time has now come to pool the resources available in the market and the technology available across the world to expedite mineral exploration so that immense mineral potential of the country is harnessed to the fullest extent. With this, we now invite the private sector to join hands with the government agencies in this task of exploring the mineral wealth of the country. Thank you. Well, thank you very much, sir, for that wonderful update. You've been the guiding and encouraging force towards providing the fillip to geoscientific activities in the country, and your presence on today's occasion would further encourage us to do well in the interest of nation. Well, ladies and gentlemen, we take a small breather here and would like to draw your kind attention to a small audio-video presentation which focuses on the aspect of unlocking exploration. It is designed with immaculate focus. The video depicts a paradigm shift in the exploration sector with weightage to change in nuances, approach, methodology, of course giving due cognizance to the policy matters. Can we have the video, please? India is blessed with an immense potential of natural resources. Led by the Geological Survey of India under the Ministry of Mines, these resources have been explored for a long time. The search of mineral deposits is a very complex and risky endeavor, which requires lots of scientific data, knowledge, experience, and capital investment. Until now, the onus of this rested largely on government bodies. But in a great leap of faith, all that is about to change. The Ministry of Mines is now inviting the private sector to participate in exploration and development of mines in India, right from the reconnaissance stage of exploration. Currently, only government agencies and PSUs do exploration without auction or license. But given the size of the country, decreasing rate of discoveries and increasing demand of minerals, the number of exploration programs need to be scaled up manifold. Mineral exploration is a systematic process in which a search area is gradually reduced by application of geological data, knowledge, and state-of-the-art techniques. The immense potential of mineral resources and the geological setting in the country is at par with mineral-rich nations such as Australia and South Africa. The functioning of modern society greatly depends on minerals, and the mining sector in India can have a colossal impact on it. Through the use of modern techniques and research, the Indian mining industry can reach new heights and potentially improve its contribution to the gross domestic product, which currently stands at 2%. The Government of India, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, has taken a number of reform initiatives to improve the exploration trajectory of the country. The most notable ones being the MMDR Amendment Act 2015, creation of National Mineral Exploration Trust NMET, National Mineral Exploration Policy 2016 and National Mineral Policy 2019. The Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 was comprehensively amended in 2015 to bring the auctioning for allocation of mineral concessions, which has removed discretion and brought in transparency. This also aims at enhancement of the revenue accruing to the state government with the operationalization of the mines. Furthermore, in order to fully harness the mineral potential of the country, increasing employment and investment opportunities in the mineral sector by accelerating the pace of exploration and auction of its mineral resources, the MMDR Amendment Act 2021 has been notified on the 28th of March 2021. Some of the major reforms brought in this Amendment Act 2021 for attracting private explorers are simplification of the exploration regime, making the National Mineral
Exploration Trust, NMET, an autonomous body, and provisioning notification of private entities for carrying out exploration. Mineral exploration goes through 4 stages: G4, G3, G2 and G1. In this entire process, G4 is the first stage of reconnaissance exploration, while G1 is the final stage of it. Earlier, auction was done after the completion of at least G3 stage of exploration. But after the notification of MMDR Amendment Act 2021, auction can be done even at G4 stage, with the assurance of seamless transition to mining lease in case of discovery. This is being done in order to encourage investment and participation by private entities in early stage of mineral exploration. The government is therefore committed to encourage private participation at all levels of exploration through the process of bidding. Major developments have been made by the GSI to enhance the baseline geosciences data required for mineral exploration based on evolving knowledge and new concepts. Besides completing geological mapping on the 1:50,000 scale of the entire country, GSI has completed national geochemical mapping and national geophysical mapping in obvious geological potential area. The National Aero Geophysical Mapping, an ambitious program for acquisition of high-quality magnetic and radiometric data of the entire country at a flying height of 80-meter and 300-meter line spacing, is under progress. All the acquired baseline data is placed by GSI in public domain on a state-of-the-art online geospatial platform for easy access and free download for analysis of all stakeholders. GSI's continuing efforts to enhance the mineral potential has led to an ambitious project, Uncover, in collaboration with Geoscience Australia. The project has been developed in order to harness the mineral potentiality of India at a deeper level. Moreover, the Regional Mineral Targeting Project, which is a concept-based exploration, is also underway by the GSI. Responding to the changed auction regime, GSI has demarcated 100 mineral potential blocks explored up to reconnaissance stage G4. These will be up for auctioning and are expected to have a positive impact on the country's mineral sector. The reports comprise exploration blocks for precious metals, base metals, critical minerals, fertilizer minerals and bulk minerals belonging to favorable geological environments over fertile geological basins and known mineral belts that may encourage exploration with varying risk-return ratios. India is poised to find her true potential in the exploration sector with the help of these new reforms. The private sector will play a significant role in the future of mineral exploration in India, which will enable the mining sector to make its rightful contribution for the development of the country. Well, ladies and gentlemen, that was just a gist of how we intend to unlock the immense potential that lies in our motherland. Well, moving ahead, this moment also coincides with the release of the executive summary of 100 potential blocks representing favorable geological milieu and which will boost exploration and mineral production involving a range of commodities with reduced risk-return ratios and thus usher in a new chapter in the development of mineral sector in the country. The Geological Survey of India has made an earnest effort to carve out dimensioned potential zones of reconnaissance survey blocks from the G4 stage geological reports in respect of various commodities. A wealth of information on Indian resource position, the present status of exploration, drilling, sampling, survey mapping, UNFC guidelines, all this information has been collated and collected in selection of these potential mineral blocks. The executive summary booklet is self-explanatory in approach, is lucid and specific to needs as a source of information. Today, this booklet is being released by our revered dignitary on the dais, and we would like to catch hold of this wonderful moment through photographs.
Once again, I would like to thank our dignitaries for having doing the honors. Well, ladies and gentlemen, we are simply honored to have amidst us, as our guest of honor, the Honorable Minister of State in Mines, Coals and Railways to the Government of India, Shri Rao Sahab Patil Danve. To see him perform live could be somebody's gain, but not to have his presence felt will be a definite loss, and despite his preoccupation, he makes an effort to join us virtually. It is my duty to present before you a passing glimpse of this charismatic leader, whose journey and achievements in his career in politics and otherwise is a glaring reflection of his hard work, commitment and dedication towards his duties. Riding on a firm educational background, Shri Danve made inroads into politics in the early 80s and since then hasn't looked back, taking progressive leaps on the road to success. He has actively served on the national executive and has held several important positions in the party that he has served. He has behind him over 40 years of strong political career, with nothing less than a Midas touch to all that he has endeavored to achieve. He has led many important positions like Member of Standing Committee of Commerce, Rural Development, Panchayati Raj, Finance, Agriculture, Assurance Committee, Petroleum and Natural Gas, Consultative Committee for Communication and Information Technology, and the list is just endless. He served as Union Minister of State, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 2014-15, and then again in 17th Lok Sabha for the period in 2019-21. He assumed office as Honorable Union Minister in Coal, Mines and Railways in July 2021. His stint in the current portfolio that he is entrusted with is equally awe-inspiring. A thoughtful, hard-working and visionary leader, he is extremely popular for his human service to the community and deep-rooted interest in social welfare programs. May I request, ladies and gentlemen, to kindly put your hands together and welcome our honorable guest of honor on the occasion, where he joins us virtually. You're welcome, sir. नमस्कार. कराए शुरू. नमस्कार आप सभी को. माननीय प्रहलाद जोशी जी, खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री, हमारे खान सचिव श्री आलोक टंडन जी, महानिर्देशक भारतीय जीएसआई श्री राजेंद्र सिंह गरखाल जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि, राज्यों से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का इस बैठक में स्वागत करता हूं और मुझे आज आयोजित इस बैठक में आप सभी के बीच उपस्थित होकर आनंद हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि इस देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो। इसे हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों का विकास किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो, ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। देश की जीडीपी में मिडल ब्लॉक क्षेत्र का योगदान मात्र 2% है, जो बहुत ही कम है। हमें इसे बढ़ाना होगा और इसे 5% तक ले जाना होगा। इस कड़ी में खान मंत्रालय भारत सरकार ने हमारे मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी के कुशल दिशा निर्देश में मार्च 2021 में एमएमडीआर एक्ट संशोधन अधिनियम भी पारित किया है, जिससे इस क्षेत्र में सरलीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए जरूरी होगा कि कम से कम 500 मिनरल ब्लॉक को नीलामी किया जाए। इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जीएसआई द्वारा ऐसे 100 मिनरल ब्लॉक राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। जो ब्लॉक G4 स्टेज पर पाए गए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के 21, राजस्थान के 13, छत्तीसगढ़ के 10 और कर्नाटक के 9 मिनरल ब्लॉक भी शामिल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 100 मिनरल ब्लॉकों के हस्तांतरण होने के बाद इनकी नीलामी भी बहुत ही जल्द होगी और इसके साथ ही माइनिंग का कार्य भी शुरू हो जाएगा। माइनिंग का कार्य शुरू होने से
न केवल माइनिंग क्षेत्र का विकास होता है, बल्कि साथ ही साथ ऊर्जा, स्टील, यातायात आदि क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के कार्य में सहभाग लेने के लिए फिक्की जैसे संस्था विशेष योगदान है, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे भी फिक्की ने ऐसे ही योगदान जारी रखने की मैं उनसे विनती करता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Well, thank you very much, sir, for having graced this occasion and sharing your valued thoughts, guiding us to achieve bigger laurels in the interest of nation. We deeply acknowledge your presence and look forward to having you in our future events as well. Well, ladies and gentlemen, the most important segment of this release ceremony is the handing over of memorandum of 100 mineral blocks to state government based on the findings of Geological Survey of India. As per the data available, the auctionable blocks pertain to 14 different states, of which they represent very fertile geological milieu, but even those with marginal topographic constraints have joined the wagon with lesser number of contributions if we look at the numbers. Now, the state of Madhya Pradesh, which has already been talked about it, we have 21 blocks, Rajasthan 13, Chhattisgarh 10, Karnataka and Andhra Pradesh 9, and Maharashtra 8 blocks are major contributors. Odisha, Tamil Nadu 7 blocks each, Jharkhand 5, Bihar 4, Uttar Pradesh 3, Kerala 2, and Uttarakhand and West Bengal with 1 each. Together complete the tally of 100 auctionable blocks. These blocks represent the following commodities: the ferrous group of minerals, precious metals, non-ferrous and strategic minerals, industrial and fertilizer minerals. It's a matter of happiness for this forum to realize this moment of pride and has been designed to acknowledge the efforts of all concerned. Well, ladies and gentlemen, I'm pretty delighted to share that at this moment, the proceedings of this historic moment is reaching out to a much larger audience base with the help of social media and is being witnessed as a historic movement, leaving an indelible impression in the minds of all. Okay. Ladies and gentlemen, may I now, for doing the honors, may I request Director General Geological Survey of India, Shri R.S. Garkal, to kindly step forward and kindly facilitate in the proceedings. I would also request our Honorable Union Minister for Mines, Coal and Parliamentary Affairs and our Chief Guest on the occasion to kindly step forward onto the platform, sir, for doing the honors. All these memorandums will be handed over by your good self. I also request our other dignitaries, our minister sirs and other dignitaries on the dais to kindly step forward on the platform. Well, just a iota of information for all those recipients who are coming forward to receive the memorandum from Honorable Sir, that we will go alphabetically with the name of the states. A brief description of these blocks pertaining to each state will be shared with this august gathering, and on the completion of each, the state government dignitary or the representative may kindly come upstage and receive the memorandum from Honorable Minister Sir. Ladies and gentlemen, we would request you to continuously encourage us with applauses coming from the audience, because this is going to be one of the most sought after moment in the history of mineral industry in India. Okay, starting with the state of Andhra Pradesh. Guarding the eastern frontiers, the state of Andhra Pradesh has an encouraging geological milieu with 80% of rock exposures and fertile mineralogical setup. It is offering 9 precious blocks of base metal, diamond, iron ore and manganese. The bulk commodities, namely manganese with 5 blocks and iron ore 2 blocks, are an integral part of the Eastern Ghat Mobile Belt and Nellore Schist Belt for auction as composite license. The base metal and diamond blocks are part of the Nellore Schist Belt and Kudappa province of Nellore and Kudappa district respectively. Ladies and gentlemen, we have our Honorable Minister Sir from the state of Bihar, and going alphabetically, I'll just give a brief description of what we have in store coming from Bihar. I would also request Madam to kindly join the proceedings. The state of Bihar, with almost 92.7% of its surface area under cover of alluvium, has still got a fringe of very exciting rock exposures in the Chota Nagpur Gneissic complex towards the south and Windian exposures to the west. We have 2 commodities on offer as auctionable blocks for potash 3 blocks and glauconitic sandstone of the Sembri group, and another block is a part of Chota Nagpur Gneissic complex situated in Aurangabad and Gaya districts for chromium, nickel and platinum group of elements.
Thank you, sir. Moving on to Chhattisgarh, the state accounts for 10% share in the total auctionable blocks available for composite license. 2 blocks each for potash bauxite and 1 for iron ore are part of the Chhattisgarh Supergroup, Deccan Volcanic Province and Shilpi Group. Those for nickel, platinum group of elements, gold and graphite are part of the Sonakhan belt of Bastar Creton and Chota Nagpur Naisik complex, respectively. Okay, moving on to the state of Jharkhand, the state which is mineralogically very rich in contributing 5% of the share of total blocks available. The bulk commodity blocks of phosphorite and potash, 1 each, and iron and manganese 2 blocks are part of the Vindhyan Supergroup and Iron Group. The 2 blocks for gold exploration are part of the Iron Ore Group, Singhbhum Creton and Saraikela and Kharswan district. Okay, moving ahead, may I once again request the Honorable Minister, Sir, Shri A. Halappa Basappa from the state of Karnataka to receive the memorandum from Honorable Chief Guest on the occasion. The state of Karnataka, flanking the southwestern frontier, has been identified with 9 auctionable blocks. Ladies and gentlemen, 9 auctionable blocks. The available bulk commodities of limestone and auctioning as composite license in part of sedimentary succession of the Bhima Basin in Gulbarga district. The potential blocks for gold exploration, 7 numbers, is a part of Chitradurga group. The blocks fall under Haveri, Chitradurga, Dharwad, Bellary and Devangiri and Hassan districts of Karnataka. Well, ladies and gentlemen, moving forward, if we have a representative from the state of Kerala, they can come forward, or alternately, we can request Shri Janardhan Prasad, ADG and HOD Southern Region to kindly come forward and receive the memorandum. The state of Kerala offers 2 auctionable blocks of bauxite, which are a part of Wayanad Supracrustal and PGC1 in Kasaragod district. Well, coming on to the state of Madhya Pradesh, I once again request the Honorable Minister, Sir, for Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh, Shri Brajendra Pratap Singh, to receive the memorandum for the state, and it is coming up with 21 blocks out of 100 blocks available. And they lead the pack in terms of total share. Bulk minerals, namely phosphorite 3 blocks, manganese 2 blocks, and limestone 4 blocks, are all a part of Bijapur Group, Lunawar Group, and Bagh Group of rocks, respectively identified for auction as composite license. We have 2 potential blocks for gold as well, 2 for base metal, 1 for PG, chromium, nickel, 1 for PG, and 2 for diamond, and 4 for graphite. Thank you very much. Moving on to the state of Maharashtra. The state of Maharashtra with 8 potential blocks is another promising contributor. 1 block of iron ore and 2 blocks of bauxite representing younger supracrustals equivalent of Chitradurga group, and laterites over Deccan traps. 1 potential block for chromium nickel, iron manganese, 2 for PGE, Ni and chromium, 1 for nickel chromium and cobalt, and 1 for PGE nickel chromium have been identified for auctioning in Sindhudurg district. Moving on to the state of Orissa, which again is a mineralogically very rich state. From the state, 3 blocks of chromite and 3 for manganese as bulk commodities are part of the iron ore supergroup, Condylite group of Eastern Ghat supergroup of rocks. Well, moving on to the state of Rajasthan, amongst the leading states in terms of share, state of Rajasthan offers 13 potential blocks for exploration of 3 blocks of potash and 4 for limestone, representing Marwar supergroup of Nagaur, Ganganagar, Evapurite Basin, Vindhyan supergroup and Jaisalmer formation, respectively, which have been identified for composite license. Well, from the state of Tamil Nadu, 7 potential blocks are available for auction in the state. 3 blocks of limestone and 3 for iron ore are part of the Condylite and Chanukite group of southern granulite terrain of Archean age. 1 block of tungsten representing Chanukite group of southern granulite terrain in Madurai district has also been identified for auction. Well, going alphabetically, but once again coming northwards, we have the state of Uttar Pradesh, and the state offers 2 potential blocks for Andalusite representing the Parsoi formation of Mahakoshal group for exploration and development in Sonbhadra district. Another commodities for gold as a part of the Parsoi formation of Mahakoshal group is also available as an auctionable block in Sonbhadra district. We have the northwestern state of Uttarakhand,
wherein one potential block has been identified for limestone for auction as a part of the Pithoragar formation of Garhwal Group. I would request Shri Joyesh Bagchi sir to kindly step forward and receive the memorandum on behalf of the state of Uttarakhand. And we have the state of West Bengal, identified potential block for gold belongs to Chaibasa formation and Dalbhum formation of Singhbum Group. The block is located in Bankura and Purulia district. Oh, may I request, if we don't have a representative, may I request Shri Asit Saha sir, DDG PSS, Geological Survey of India, to kindly step forward and receive the memorandum. This is for the state of West Bengal, which is being received on behalf of state government representative by Shri Asit Saha from Geological Survey of India. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. That brings us to the end of all the 100 auctionable blocks which were on offer to respective state government departments. Ladies and gentlemen, we once again request you to kindly take your seats on the dais. Well, ladies and gentlemen, this moment has been designed in a way to serve an interactive platform, and we would not like to miss out on the opportunity of having such wonderful esteemed guests on the dais. We have Honorable Minister Sirs from 3 respective states of Bihar, Madhya Pradesh and Karnataka, and we are simply delighted to have their presence. Once again, sir, we extend a very warm welcome to you, sir. So, moving on that line, we would like to hear from our respective Minister Sirs, and on that note, may I request first and foremost, Sri Janakram, Honorable Minister for Mines and Geology, Bihar, to kindly share his experience as far as today's matter is concerned. But before that, sir, just a passing introduction to our respected and revered guest. Well, hailing from Gopalganj district, Bihar, he has earlier served as member of the Standing Committee in Department of Commerce, has served as member of the Railway Convention Committee in Department and member of Consultative Committee under Ministry of Petroleum and Natural Gas, to name a few of his commitments. He takes a lot of interest in discussing contemporary political perspectives and organizational issues, and has achieved a niche for himself, serving his present department with a futuristic approach and an unparalleled dedication for his subjects. I may request, sir, to kindly, sir, you can address the gathering from there also. If you feel like, you can come here. Okay, please. मैं सबसे पहले भारत सरकार के खान मंत्री यशस्वी आदरणीय प्रहलाद जोशी साहब जी, साथ ही राज्य खान मंत्री राव साहब पाटिल दानवे जी, साथ में मध्य प्रदेश कर्नाटका के सम्मानित मंत्री, मंच पर विराजमान लोहिया जी, टंडन जी, सम्मानित मंच, और भारत सरकार के सभी राज्यों से उपस्थित सम्मानित पदाधिकारी, देवियों और सज्जनों, मैं हृदय से आप सबको स्वागत करते हुए और विशेष स्वागत अभिनंदन भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी साहब को, मैं भी 14 से और 19 तक लोकसभा का सदस्य गोपालगंज से रहने का अवसर मिला, और खास करके प्रहलाद जोशी साहब को कर्नाटका से लेकर के और दिल्ली संसद भवन तक आपका मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होते रहा है, और मुझे काफ़ी उत्साहित प्रसन्नता हो रही है कि आज बिहार प्रदेश के मंत्री के रूप में आपके बीच में उद्बोधन करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। और खुशी इस बात की है जो मिनरल्स क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे
जो 4 ब्लॉक प्राप्त हुआ बिहार को, और मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है 75वीं आजाद भारत में जो हम सब देशवासी अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, और साथ ही अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि राव साहब पाटिल जी जैसे बताया कि अर्थ जगत में हम 2% मिनरल क्षेत्र में सहयोग कर पाते हैं, लेकिन आपको आशा और उम्मीद जैसे आज सभी पदाधिकारी सम्मानित अधिकारियों के नेतृत्व में, और खास करके मैं बिहार के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो बिहार देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अखंड भारत को विकसित भारत में परिवर्तित करना है, तो बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, जब तक आत्मनिर्भर बिहार नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर राज्य नहीं बनेगा, हम आत्मनिर्भर देश का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी साहब के नेतृत्व में ये कदम बढ़ चुका है। और मुझे लगता है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार प्रदेश में जो आपने 4 ब्लॉक दिया है और त्वरित करवाई, बिहार से प्रधान सचिव यहाँ बैठी हुई हैं, और मुझे लगता है कि बिहार के समस्त पदाधिकारी भी त्वरित कार्रवाई करते हैं। आशा नहीं भरोसा है कि आपके बताए रास्ते पर चल करके इस क्षेत्र के और भारत के और आपके हाथों को मजबूत करने के लिए मिनरल क्षेत्र में जो मिला है, मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं हैं आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए। मुझे ज्यादा कुछ न कहते हुए सारी बातें आ गई है, और मुझे लगता है कि गोल्ड का भी संभावना है, कोल का भी बिहार में संभावना है, कई ऐसे ग्रेनाइट पत्थर का भी संभावना है। और मैं तो आग्रह करता हूं आपसे कि आप कमेटी बना करके और बिहार प्रदेश में आप भेजें। और मुझे लगता है कि सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका मार्गदर्शन में जितना सहयोग बिहार सरकार का करना होगा सरकार करेगी, और आपके हाथ सहित देश के प्रधानमंत्री के हाथों को हम मजबूत करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाते हुए सबको अभिनंदन स्वागत करते हुए नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे बीच आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्ता के लिए। और ladies and gentlemen, we would like now to move ahead, and we have Shri A. Halappa Basappa, Honorable Minister of State for Geology and Mines, Government of Karnataka. But before I request Sir to kindly come on the dais to share his views, just a few words as a passing introduction to him. Shri A. Halappa Basappa, Honorable Minister for Mines, Karnataka, had some very key contributions in the social sector, bringing futuristic reforms for all-round development. An accomplished and acclaimed social worker, he has given significant contributions in mineral sector and has developed a close interface with Honorable CM Karnataka to bring on-ground reforms introduced by central government. He is presently holding portfolio of mines and geology and women and child empowerment of differently abled and senior citizen in the state government. He is keen to development of mineral sector in the state, which is endowed with mineral wealth. May I request Sir to kindly come forward and share his views. It is my privilege to be here to witness this very special occasion. Respected Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister for Mines, Coal and Parliamentary Affairs, Sri Rao Sahib Patel Danveji, Honorable Minister of State in Mines, Coal and Railways, Sri Jankaram ji, Sri Brajendra Pratap Singh ji, Sri Alok Tandon ji, and Sri Rajendra Singh Garkal ji, and the dignitaries present here on and off the dais, all the participants witnessing the event,
through video links from across the nation. Media friends, ladies and gentlemen, I am very glad and thankful to Sri Joshi ji, Honorable Minister, for giving me this opportunity to be part of this national event, to witness the handing over of 100 G4 level explored mineral blocks of various bulk and non-bulk minerals by the Geological Survey of India to state governments along with information memorandum for auctioning them as composite license. As we all know, Karnataka one the major mineral rich state in the country. The state is well known for its production of gold in the country. Apart from production of this noble metal, the state contributes significant productions of iron ore, manganese, bauxite, chromite, copper, limestone, etc., which are very vital for the manufacturing sector in the country. A large part of the Karnataka state has a geological potential area of platinum group of elements: gold, chromite, iron ore, manganese, nickel, and rare earth elements. There is a huge scope for the mineral exploration agencies to discover many new deposits in this our Karnataka state. The rare earth elements are vital for green technology in the country. Karnataka geology supports for discovering new RE deposits. I appreciate GSI for bringing out new RE and gold resources bearing blocks in Karnataka apart from other mineral commodities. GSI, being one of the premier scientific organizations of our country, has been supporting our department and state government ever since inception in delineating the mineral resources, and I am sure that the recent formulation of a joint working group technical committee have strengthened our association in identifying more blocks and to auction the same. GSI has done a remarkable job in carving out the potential G4 level explored mineral blocks within a short span of time, and we will certainly work together to auction these blocks that are being handed over to us today. I strongly feel that this is just a beginning of new era in this mining industry, and will follow with identification of many more blocks that can be put for auction in future in view of recent amendments to MEMC rules. I will take this opportunity to congratulate our Union Minister for Mr. Sri Joshi ji, who is from our state of Karnataka, and his team of officers for their commitment in resolving many long pending issues of the mining industry through simplification of rules and regulations, which has really helped the department and the industry in expediting the process of granting the mineral concession without much of delay and litigations. The simplification of the statutes has made a paradigm shift by giving pace to identification of the natural resources through exploration under the NMET and allocation of the mineral blocks through transparent auction process, improvement of mining impacted area and people through DMF. This has certainly boosted the confidence of legitimate miner in the country and discouraged the illegal mining activities. This has led to more investments, setting up industries, creation of more job opportunities and realization of more revenue to the government. Sir, I am inspired by your pro-people and pro-industry vision and look forward to adopt these changes in our mineral rules as well to make it more pro-industry and pro-people. I strongly believe that the recent liberalization of rules has not only expedited the process of allocation but also emphasized on operationalizing the leases without much delay. I am proud to state here that Karnataka is the first state in the country to auction the iron ore mining blocks, and till date state has auctioned 19 blocks, out of which 13 blocks are operational. Of course,
Due to recent amendments, we are able to operationalize the expired leases auctioned blocks to start their mining operations within no time. We have issued a notice inviting tender for 7 blocks on 31/8/2021, which includes 2 limestones and 5 iron ore blocks. And shortly within the next week, we will be issuing NIT for another 5 blocks. We have a target of about 20 blocks for auction in this financial year, which will include Ajjanalli gold block, Ramanadurga iron ore blocks for auction as composite license. I am sure that this number will increase by auctioning the blocks that are being handed over to us today by GSI. I am glad to mention here that Karnataka is the only state in the country producing the gold through our state PSU called HGML, and we are planning to enhance the production capacity by adopting the latest technologies. Hence, we look forward to enhance the glory by focusing more on precious minerals, base metals, etc. in the future. In the 100 blocks list of today being handing over to 14 states, Karnataka gets 7 blocks of gold and 2 blocks of limestone identified by GSI. As Karnataka being mineral rich state, I ask GSI to work and give more and more blocks for auctioning so as to increase the private participation in mineral deposit discovery and mining in Karnataka state. Last but not the least, I would request the Honorable Minister for Mines to extend his support in bringing some more simplification process in getting forest clearances for exploration projects as done to the mining projects of auctioned blocks. This will surely enhance the accuracy in resource estimation through exploration and would definitely bring in more confidence to bidders who participate in the auction. I thank Honorable Minister Sri Jochiji and his fellow officers, Government of India, Geological Survey of India, for handing over 9 blocks to Karnataka. Thanks to one and all for giving me this opportunity. Jai Hind, Jai Karnataka. Well, thank you very much, sir, for addressing the gathering and also making us aware of the huge potential that lies within the state of Karnataka and the initiatives of the government been taking in that direction. Well, ladies and gentlemen, we also have the auspicious presence of Honorable Minister of State for Geology and Mines, Government of Madhya Pradesh today with us, and he's none other than Shri Brajendra Pratap Singh. But before I request him to kindly come on the dais and address the gathering, just a few words about him. Well, Honorable Minister Sir has earlier served the position of State Minister, Independent Charge in Madhya Pradesh government with the portfolio of Farmer Development and Agriculture. Eventually, he has also served the Departments of Public Service Management, Tourism, Sports and Youth Welfare from 2009 to 2013. In 2014, he was appointed as the State Secretary of Madhya Pradesh in the party that he served, and in the following years, he was also made the in charge of the minority front of the organization. One of the most applauded achievements, ladies and gentlemen, that he has to his credit is the recognition of the Public Service Management Department that was constituted under him. What sets him apart in his approach to work in his present portfolio is his compassionate way of looking at his subjects to create an overall balance and prioritizing the well-being of its people. May I request, sir, to kindly come and address the gathering? Honorable Minister of Mines and Coal and Parliament Affairs आदरणीय हमारे प्रहलाद जोशी जी, हमारा बीच में वर्चुअली उपस्थित हैं ऐसे हमारे आदरणीय हमारे राव साहब पाटिल जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन माइंस, कोल एंड रेलवेज, हमारे कलीग्स हमारे साथ में जो उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय जनक राम जी हमारे बिहार से जो मिनिस्टर हैं, हमारे कर्नाटका से आदरणीय बासप्पा जी, हमारे सेक्रेटरी माइंस आदरणीय आलोक टंडन जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी संजय जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे डायरेक्टर जीएसआई आदरणीय राजेंद्र जी एवं सभी उपस्थित इस
सभागृह में सभी हमारे पास जो हमारे बीच में अधिकारीगण सभी का मैं इंच मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिस स्टेट से मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश एक रिच स्टेट है माइंस के मामले में, खासकर ये जो हमारी खनिज संपदा है काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारे स्टेट में है, चाहे वो डायमंड हो, चाहे कोल हो, चाहे हमारा कॉपर हो, या हमारा बॉक्साइट हो, ग्रेनाइट हो, या हमारा लाइमस्टोन हो, ग्रेफाइट हो, ग्रेनाइट, मतलब सभी हमारा करीब करीब मिनरल्स हमारे स्टेट में हैं। और इसलिए मैं ऐसे स्टेट से बिलोंग करता हूं। और अभी मेरी खुशी भी है कि जो एक नए नियम के तहत हमारे जो ऑक्शन होने थे उसमें से हम लोगों ने करीब 26 ब्लॉक आइडेंटिफाइड किए थे, जिसमें कि 14 ब्लॉक्स हमारे अलॉटेड हो गए हैं, और जिससे कि जो हम लोगों का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो 37,000 करोड़ का है, जो मैं मानता हूँ एक बड़ा अमाउंट हमारा एक राजस्व कंट्रीब्यूशन में होगा। और उसके साथ ही अभी हमारा जो नया जो हमने आइडेंटिफाइड किए हैं, ऐसे हमने 86 ब्लॉक्स आइडेंटिफाइड किए हैं, जिसमें से कि अक्टूबर 21 तक हम 20 ब्लॉक को उसकी NIT हम लोग बनाना चालू कर दिया है, प्रस्तावित कर रहे हैं, और मार्च 22 तक हमारे ऐसे 25 ब्लॉक्स की NITs हमारी करीब बन जाएंगी, जिसको कि हम ऑक्शन पे ले आएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो इसके अलावा भी हमारे माइनर मिनरल्स में भी 82 ब्लॉक्स हैं, जिसके लिए भी प्रिलिमिनरी हमारी जो काम है ऑक्शन का वो भी हमने चालू कर दिया है। एक हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे जो राजस्व का रेवेन्यू है मध्य प्रदेश का, उसमें माइनिंग का बड़ा पार्ट है, जिसका कि लास्ट ईयर 2021 में 5,185 करोड़ का हमने कंट्रीब्यूट किया था, जबकि हमारा टारगेट जो वो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट का था 5,000 का था। इस बार जो हमें टारगेट दिया गया स्टेट की तरफ से वो 6,000 का है, और मुझे पूरा भरोसा है कि कोरोना जैसे काल में भी जो टारगेट हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट को मिला है वो हमने अचीव किया है, और हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है, आज हम यूनियन मिनिस्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज G4 लेवल के आपने 100 ब्लॉक्स डिफरेंट स्टेट्स को दिए हैं, और उसमें मध्य प्रदेश को इसलिए मैं खुशी हूं 21 ब्लॉक्स हाईएस्ट ब्लॉक आपने मुझे दिए हैं। और मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो ब्लॉक्स दिए हैं उसको मैं निश्चित रूप से जल्दी मैं ऑक्शन प्रोसेस पे लाएंगे, और जल्दी हम उसको काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका सपोर्ट चल रहा है, जिस हिसाब से आपका हम लोगों को स्टेट्स के ऊपर आपका ध्यान है, हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे। हम इसलिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी आपने रिसेंट हमारा जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के लिए जो NMET से हमें पैसा देने की बात हम लोगों ने मांग की थी, वो आपने स्वीकृत कर दी है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो फीस आप स्वीकृत की है। साथ में मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो खासकर जो एटॉमिक हमारा मिनरल डिवीज़न है, उसके तहत आपने जो रॉक फॉस्फेट वाला जो 122 हेक्टेयर का एरिया था, उसमें से 14 हेक्टेयर एरिया निकाल के बाकी के लिए ऑक्शन के लिए आपने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। थर्ड, मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने अभी ऑक्शन प्रोसेस में जल्दी से लाने के लिए आपने MECL के 2 अधिकारी और GSI के 6 अधिकारी हम लोगों को आपने सेवाएं दी हैं मध्य प्रदेश सरकार को। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि ग्लूकोनाइट का अभी तक जो एवरेज सेल वैल्यू है वो अभी निर्धारित नहीं हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसकी एवरेज सेल वैल्यू यदि आप निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड थिंग, 5 हेक्टेयर्स के नीचे के जो एरियाज़ हैं वो अभी ऑक्शन में नहीं हैं, उनके लिए भी आप यदि परमिट करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत से एरिया हमारे ऑक्शन में आएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं सभी को, क्योंकि मुझे आज विचार रखने के लिए इस मंच का पे मुझे आमंत्रित किया, मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपने बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने अपनी उपस्थिति से इस मंच का और इस सभा का बहुत मान बढ़ाया, और मध्य प्रदेश के भू संपदा के बारे में हमारी जो विस्तृत जानकारी दी उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। Ladies and gentlemen, we also have, though virtually, we have the presence of Shri Praful Kumar Malik,
who's Honorable Minister for Steel and Mines, Odisha, and he would be joining us through VC. And just before I request Sir to address the gathering, just a few words about our Minister, Sir. Honorable Minister, Sir, since his early days has been an avid reader, a dedicated student of social service, and he has pursued the subject of law. He gives tremendous efforts for works of societal nature, and his special interests include development for poor forest workers and agricultural beneficiaries. He has held the office of Minister of State for Steel and Mines, Labour and Employees State Insurance, Energy, and much more. Well, he has been on that post for a very, very long time, and he has got tremendous amount of experience as far as the Ministry of Steel and Mines is concerned. Having served as member of various committees, he has a huge experience base behind him, which puts him in the top bracket of performance in the government. May I request Shri Praful Kumar Malik, Honorable Minister of Steel and Mines, to kindly address us. Namaskar, Honorable Minister for Mines, Coal and Parliamentary Affairs, Honorable India, Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister for State Mines, Coal, Railway, Shri Patil ji, Honorable Minister Mines, Geology, Bihar, Shri Janak Raman ji, Honorable Minister Mines, Karnataka, Honorable Minister Mines, Madhya Pradesh, Secretary Minister of Mines, Shri Alok Tandon ji, and other senior officials and dignitaries of the ceremony. As we know, geologically exploration has gained a special focus in mineral sector after the historic amendment for MMDR Act, Amendment Act 1957, notified on 12th January 2015. The provision of granting mining lease on the basis of a simple application was done away with the grant of mineral concession to auction has been introduced in order to bring in transparency in the process of granting concession of mineral resources in the country. In this regard, I am happy to make a mention that state of Odisha has been one of the leading states to implement the provision of MMDR Amendment Act 2015 at the earliest by auctioning the Bharat Sagar Sai iron ore block during 2015 and 16, which was the first iron ore block in the country to be successfully auctioned. We have so far conducted auction for 31 major mineral blocks, including 24 mining leases, which had expired on 31st March 20. Out of 24 expired leases auctioned during 2021, mining leases have been granted, and the operationality in 19 cases, mining lease could not be granted in other 5 cases due to non-compliance of the condition of the mineral auction rules 2015 by the respective report bidders. 2 mining leases out of these 5 have now been operational through Odisha Mining Corporation of Government of Odisha Enterprises, for which the Ministry of Mines had accorded approval, and I, on behalf of the state government of Odisha, express gratitude to the Honorable Minister of Mines, Government of India, and the officials of the Ministry of Mines for expeditiously approving the proposal of the state government. The other 3 expired leases have again been notified for auction on 7th June 2021, along with the 8 other virgin mineral blocks, and the auction process is likely to be conducted by the end of September. I may further indicate here that due to timely auction by the state government of Odisha, the production of iron ore and the supply of the iron ore-based industries in the entire country have not suffered at all, in spite of
expiry of 24 mining leases of the state on 31st March 2020. We have also in readiness to put 5 more virgin blocks into auction within next 2 months. The geological exploration in the state is also being taken up as a priority activity of our Steel Mines Department, and we have constituted Odisha Mineral Exploration Corporation, a full state-owned company for strengthening the geological exploration activity. Besides the state, beside the Steel and Mines Department, is also associated with the GSI MECL for geological exploration activity in the state. It is good that GSI have come up with the geological reports of 100 potential G4 blocks, including 7 in respect of our state, Odisha. We would also look forward to more such reports of both G3 and G4 blocks for putting them to auction in future. Thank you all. Jai Hind, Vande Mataram. Well, thank you very much, sir. Minister, sir, for having addressed this wonderful audience from a distance, though virtually. And we really appreciate your perseverance and patience for remaining glued to the occasion and addressing us from a distance. You let us know about the various initiatives of the government being taken up in the state of Odisha, which is obviously a very, very rich, mineralogically rich state. Well, ladies and gentlemen, before moving further or on to the next segment, I may inform that this particular occasion is being telecast live to a very wide range of audience with the help of social media. And of course, many of us, apart from what we see here, is actually watching this whole occasion live. So if anybody is having questions or any clarifications or any submissions that one may like to put, they can put it on the comment box and the officials of Ministry of Mines will retrieve that and get back to you at the earliest. Well, thank you very much. Well, moving ahead, we have amidst us Shri Tuhin Mukherjee, who is Chair FICCI Mining Committee and Managing Director SL Mining Industries Limited. And we would request him to kindly come on the dais and share his views with the gathering. Good afternoon. On behalf of FICCI, I embrace this opportunity to welcome our Honorable Minister of Mines, Coal and Parliamentary Affairs, Sri Prahlad Joshi ji. I also extend a warm welcome to Honorable Minister of State in Coal, Mines and Railways, Sri Rao Sahib Patil Danve ji. And a special mention to distinguished Minister of Mines of Bihar, Sri Janak Ramji, Honorable Minister of Mines, Karnataka, Sri A.H. Basappaji, Honorable Minister of Mines, Madhya Pradesh, Sri Bajendra Pratap Singh ji, Honorable Minister of Steel and Mines, Odisha, Sri Prafulla Kumar Malik ji, Sri Alak Tandon, IAS Secretary, Ministry of Mines, Sri Sanjay Lohia, Additional Secretary, Ministry of Mines, Sri Upendra Jesse, Joint Secretary, Ministry of Mines, Mr. Rajnesh Singh Garkal, Director General of GSI, and distinguished participants from the central government, state government, industry, press and media. On behalf of FICCI, it's a great opportunity, and I should say that it's a rare moment for FICCI to have been selected by Ministry of Mines, Government of India, and GSI to be a partner of this momentum
celebration. I think some of the speakers described this as celebration. Really, we must congratulate and compliment Ministry of Mines and Director General GSI for this evening. Taking this initiative of identifying 100 blocks or 100 exploration entities at the G4 level and handing over today to 14 states. And very interestingly, some of the very sought after mineral targeting is one is a very important mineral in our country is a fertilizer, agriculture mineral. It's called potash. You have seen, I don't know how many of you have gone through this document. You'll observe. That is what mineral is rare commodity for us. We import. And really, I must congratulate Minister of Mines and GSI for identifying such potential. Let's pray, keep our finger crossed. When you do the exploration, we get the jackpot, hit the jackpot. Along with potash, also phosphorite also. That's what our country requires. Then, next I could see in that brochure, 14 of the 14 states of the 100 blocks, there are a couple of base metals and other tungsten. So the other wonderful attempt has been done. It will go a long way in the vision of our Honorable Prime Ministers making country Atmanirbhar and Prahlad Joshi ji. Really, we are thankful to you for identifying those critical minerals which you require now. Again, I'm repeating, this potash is a mineral for us for going forward. Because that is a key element you require for manufacturing of fertilizer. Similarly, I think we'll touch base that I'm expecting that next attempt would be few more blocks where we will be addressing some of those new emerging minerals like lithium, niobium, vanadium, molybdenum. I think that Dr. General is here. He must be in his list of addressing those. So in this background, the FICCI is really very honored to host this assembly meeting here today or as a partner. And this is all the more important as our country is going through a transformation period in the midst of pandemic. And we are already preparing ourselves in a takeoff growth momentum. As we have seen that post December FY21, we are already in the growth trajectory. And this such gift, I use the word gift of natural resources to all of us, it will definitely put impetus for our growth. Thank you again, sir. Now, from the industry, it is nothing new, but again, just to refresh our memories that the role of mineral and mining in our GDP, we are all known. Unfortunately, we are still struggling around 2, slightly south of 2, less than 2. But as we know, any growth in the mineral mining industry by 1%, it will add to 1.2 to 1.4% in the industrial growth. In turn, it will give 0.3% in overall GDP growth. So the thrust on mineral and mining industry is automatically will give a boosting energy to touch base or to achieve our Honorable Prime Minister's dream of touching $3 trillion economy. So I think all of us, all of us mining industry, we are fully aware of that. I'm not going to that details. Considering this scenario, I will not take much of your time. Again, FICCI will be ordered and take this opportunity wherever, Honorable Minister Joshi ji, you are here. Whenever you need, 24/7, we are there with you, with the Minister of Mines and GSI. So wherever you need us, we are there to help you. We are there to support you 24/7 to provide, and in the Delhi level, in the state level, in the industry level, wherever you are, we are there. Thank you so much, sir. Thank you.
Well, thank you very much, sir, for helping us realize this wonderful moment, momentous moment, with your support, and also letting us know about the perspective of the industry, how they look at the whole exercise. And obviously, it's a wonderful initiative from the Government of India coming up, which will open the business market to one and all. Well, ladies and gentlemen, we have finally come to the moment which we have been so anxiously waiting for, to lend our ears to the chief guest on our occasion. But before I request, sir, to kindly address this gathering, it shall be my honor to introduce him briefly and present a passing glimpse of this charismatic and workaholic statesman who has achieved so much in a very small span of time. While riding on a firm academic background, since younger days he has been a dedicated party worker, an activist, and has always had a humanitarian outlook towards cause of poor, downtrodden, apart from his concern towards social, regional and national issues. Earlier as district president and later as general secretary Karnataka state unit of the party, he has been recognized as a man of the masses. As recognition to his hard work and dedication, and he was elected to the Member of Parliament with a thumping majority in 2004, 2009, 2014 and again in 2019 from the Dharwad constituency of Karnataka. He has also served as an ST member of several standing committees like Chemical and Fertilizer, Transport, Finance, Railways, Urban Development, and delivered with unfailing regularity owing to his experience, statesmanship, technical acumen and virtuous bonding with his subjects. He was also a member of the delegation on empowerment of women to UNO and was richly lauded for his views. His guidance and leadership to steer the aspirations of Ministry of Mines is already yielding rich dividends and taking the nation to heights of unprecedented glory. Unfortunately, time doesn't allow us to delve deep into each of his achievements, but missing inadvertently on any one of them is something we would not like to happen. I would only say that we are blessed to have his perpetual concern towards this subject. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome our Honourable Union Minister for Mines, Coals and Parliamentary Affairs to the Government of India, Shri Prahlad Joshi. You're welcome, sir. Shri Rao Sahib Patil Danveji, Honorable MOS Coal, Mines and Railways, Honorable Minister of Mines, Government of Karnataka, Shri Hala Pachari ji, Honorable Minister for Mines, Madhya Pradesh, Shri Bijendra Singh ji, Bihar, Shri Janki Ram ji, and other ministers who have joined virtually, Shri Alok Tandon ji, Secretary Mines, Shri Garakla ji, Director GSI, Shri Sanjay Lohia ji, distinguished guests, and all representatives of the states who have gathered here. The importance of the mineral needs no explanation. Whatever we are today, we intend to build tomorrow will only be possible with the sustainable harnessing of mineral resource. Already it is referred, obvious geological potential जो हमारा है, उसमें दुनिया के कंपैरिजन में हमारा बहुत कम है. 1.5% ऑफ ऑब्वियस जियोलॉजिकल सर्वे हम अभी एक्सप्लोरेशन किया है. वो एक्सप्लोरेशन में हम 10% अभी माइनिंग हमारा चल रहा है. ऐसे तो हमारा पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है. इट डजेंट मीन दैट हमको पोटेंशियल नहीं है. जैसे ऑस्ट्रेलिया है और कंट्रीज है जहाँ बहुत अच्छे काम माइनिंग सेक्टर में हो रहा है, उस देश में कंपैरिजन में हमारा मिनरल रिसोर्सेस कम है ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम है पॉलिसी का, प्रॉब्लम है माइंडसेट का. 10 बरस तो हमने इससे पहले जो 2014 से पहले जो कुछ भी हम तो डिस्क्रिशन था. इतने बड़े देश में इतने जब बड़े आबादी है और इतना बड़ा
डिमांड है दुनिया में, जब डिस्क्रिशन जहाँ रहता है वहाँ तो प्रॉब्लम तो होती है. देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी, whenever there is a discretion, without any restriction or without any reasonable restriction rather, then there will be problem. There will be allegations, counter allegation, corruption. ये जो 2015 में हमने डिसाइड किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व निकाल के ये हमने ऑक्शन का रिजीम हमने शुरू किया. This system of allocation of mineral concession was, as you know, discretionary and making. बहुत ज़्यादा इसमें कोर्ट में चले गए. कोर्ट में बरसों तक हमारा कोयला का तो बहुत बड़ा कांड हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने सब का सब कैंसल कर दिया. इफ यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, दुनिया के चौथा बड़ा कोल रिसोर्सेस हमारे पास होते हुए भी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं. आई एम नॉट टेलिंग जो हम स्टील के लिए नॉन थर्मल कोकिंग कोल यूज करते हैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा पर्याप्त मात्रा में कोयला हमारा कोकिंग कोल नहीं है. लेकिन जो थर्मल कोल हमारे पास है वो कोयला भी हम इंपोर्ट करते हैं. वी आर हैविंग द 4th लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड. तो कारण क्या है? कारण यही है, एक तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग में पहले समस्या था, अभी तो हमने उसका निवारण करने का बहुत कोशिश की है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में. एक तो डिस्क्रिप्शन हटा के हमने ऑक्शन रिजिम तो लाया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कोर्ट के चक्कर में हमारा ऑफिसर लोग भी डरे हुए थे, तो इसलिए क्या कितना कंडीशन डाल सकते थे सब कंडीशन डाल दिया 2014 में, 14-15 में. और अभी इसका अनुभव देखते हुए हम इसमें कोयला में हो या ओवरऑल माइनिंग सेक्टर में हमने बहुत बड़ा बदलाव लाया है. इसके कारण अभी G4 लेवल पे होगा. एंड यूज रिस्ट्रिक्शन हमने खत्म कर दिया है. कैप्टिव नॉन कैप्टिव हमने खत्म कर दिया है. नहीं तो पहले कैप्टिव, वो कैप्टिव के बारे में अगर उनका एक यूनिट है, उनका यूनिट में उनको चाहिए 1 मिलियन टन, लेकिन नज़दीक और कोई रिक्वायर्ड ब्लॉक, रिक्वायर्ड माइन नहीं था, इसलिए उनको बढ़ा दे दिया. आपका जितना चाहिए बाकी रहने दो करके. He was not allowed to sell in the market. The net result was, उधर वही भूगर्भ में रहते थे, हम इंपोर्ट करते थे. और वैल्यू एडिशन का भी हमारा प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह था कि वैल्यू एडिशन के बारे में भी हमको सोचना था. उसमें भी हम बहुत पीछे पड़े हुए थे. ये सब देखते हुए हमने ये बदलाव हम लाए हैं. जैसे मध्य प्रदेश के हमारा मंत्री महोदय कह रहे थे, मध्य प्रदेश को हमने पैसा दिया. मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, आपके और राजस्थान के डिमांड आने के बाद हम सभी राज्यों को ये पैसा दे रहे फॉर एक्सप्लोरेशन, नॉट ओनली फॉर द एक्सप्लोरेशन, इवन टू फैसिलिटेट द ऑक्शन हम पैसा दे रहे.
तो इसलिए जो हम पॉलिटिकल लेवल पे हो, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग आप जो बैठे हुए स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और हमारा सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव भी है, देश के लिए अच्छे इंटेंशन से काम करना हमको सोचना चाहिए। कभी कभी क्या हम तो 2-3 वर्ष रहने वाले हैं, जितना टाल सकते हैं टाल के चले गए, तो हो गया। वाई टू टेक रिस्क, इससे काम नहीं चलता है। अदरवाइज हम सपना देखते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल हम जीतते हैं। कंपैरेटिवली ओलंपिक्स में हम अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। उधर वोल में मैच चलता रहता है, भारत जीतने के बाद हमको बहुत खुश होता है। वी फील वेरी हैप्पी, हम जीत गए। लेकिन जहां जिस क्षेत्र में, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमको अभिमान और स्वाभिमान दोनों होना चाहिए। बट जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इंपोर्ट करते हैं, और हम भारत 21st सेंचुरी शुड बिकम द इंडिया सेंचुरी, ये तो सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा जी। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, कभी कभी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम है। आई एम नॉट टेलिंग दैट वी आर ऑल, बहुत हम फास्ट ले लेते हैं आप, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मेंटालिटी एक है, उसको हम चेंज करके बोथ टुगेदर, सिट टुगेदर, वी शुड चेंज आवर अप्रोच। एक तो कोई भी समस्या आता है निर्णय लेने का, कमिटी अपॉइंटमेंट करो, और ज्यादा होता है कंसल्टेंट करो। हम खुद निर्णय लेने के 2015 में जब मोदी जी की सरकार एनएमएट का कंसेप्शनलाइज किया, इट वॉज एटोनमस। हम ही जाके पैसा कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया, क्योंकि हमको इसको रिस्क लेके काम नहीं करना चाहते थे। अभी का हमारा सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सब बैठ के निर्णय किया, ठीक है हम रिस्क लेंगे, स्टेट को पैसा देंगे, एनएमएट में प्राइवेट वालों को लेके आएंगे। कितना कर पाएंगे जीएसआई, एमईसीएल कितना कर पाएंगे? अभी हमने 100 ब्लॉक्स हैंडओवर कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा हम मानते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है ये तो देखने के लिए वी शुड ऑल, हमको दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वी हैव कम फॉर ऑक्शन रिजिम। ऑक्शन रिजिम में हम कैसे इसको और सिंपल पॉलिसी हम ला सकते हैं, मैं आपको आज अश्योर करता हूं, द मिनिस्टर्स हु आर सिटिंग हियर, ऑफिसर्स हु आर सिटिंग हियर, जो मुझे सुन रहे हैं, और स्टेक होल्डर्स को मैं आह्वान देता हूं, विद इन दिस ऑक्शन सिस्टम और ऑक्शन रिजिम, जो कुछ भी आपका रीजनेबल रिफॉर्म के लिए सजेशन है मुझे दे दो, मैं करवा के देता हूं। आपने पूछा पैसा दे दो हमको, एनएमएट से प्राइवेट लोगों को लगाने के लिए हमको प्रोविजन करो, हमने कर दिया। G4 लेवल में हमको कर दो, हमने कर दिया। और अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे ग्लूकोनाइट का एएसपी प्रोसेस हो रहा है। आप लास्ट टाइम जब शिवराज जी के साथ, माननीय शिवराज जी के साथ हमारा मीटिंग हुआ था, तब डिमांड हुआ था, दैट इज ऑलरेडी इन ए फाइनल स्टेज। और 5 एकड़ के कम के जो माइंस रहते हैं उसका ऑक्शन करने के लिए डिमांड था आपका, वो भी हमने कर दिया। जो कुछ भी डिमांड है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी
जो घोषणा दी है, इंडिया शुड बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है जी, एक स्लोगन करके एक चुनाव जीत जाने का ये मोदी जी का कभी भी सोच नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जो कुछ भी हम कमिट करते हैं उसको वी शुड अचीव दैट, ये हमारा सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। तो इसीलिए मैं आपसे बहुत आग्रहपूर्वक विनंती करता हूं, जो कुछ भी हम आज हैंडओवर आपको किया है उसमें आप कृपया जल्द से जल्द आपके मंत्री, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सभी से बातचीत करके, कभी कभी क्या होता है करस्पॉन्डेंस पे बहुत समय हमारा चले जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, दो इट इज अनरिलेटेड बट आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एयर स्ट्रिप था 150 एकर्स का, सिर्फ एयर स्ट्रिप था, फुल प्लेज एयरपोर्ट नहीं था। हमने 2014 में आने के बाद हमने बहुत कोशिश करके उसको 650 एकर्स उधर इर्द गिर्द में जो जगह था उसको अक्वायर करके बड़ा एयरपोर्ट बना दिया। जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी हो गया, उड़ान में फ्लाइट्स भी आ रहे हैं, तो जब इसका चल रहा था तो लास्ट एक ये जब हमने लैंड एक्वायर कर दिया, लैंड एक्वायर करने के बाद रनवे हो गया, टर्मिनल बिल्डिंग हो गया, तो उद्घाटन के लिए एक बड़ा जहाज लेके सिविल एविएशन मंत्री वो रेगुलर फ्लाइट अनाउंस किया था, वो आने वाले था। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टुगेदर डेट फाइनल नहीं कर रहे थे। मैंने बोला मंत्री बार बार बोल रहे, क्या हो गया? तो बाद में मैंने एक मीटिंग लिया। वो मीटिंग लेने के बाद एक चीज ध्यान में आ गया, जहां वो टैक्सी वे आके इमरजेंसी बे करके करते हैं, उधर एक लाइट का पोल था, खंबा। वो खंबा कौन शिफ्ट करना, इसके लिए करस्पॉन्डेंस चल रहा था 6 महीने से। 6 months ये लिखते थे आप निकालो, वो लिखते थे नहीं हम हैंड ओवर कर दिया, आप निकालो। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं आप? कभी कभी हमारा ये सोच के कारण हमने लिख दिया, मेरा काम हो गया। देखो हम सब मिलके ये सोचना चाहिए कि देश के लिए हम काम कर रहे हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर दिस विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, एंड हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है दे विल रिमेंबर इफ यू कैन इम्प्रूव दिस सेक्टर, एंड if at all together if you make 5 trillion economy, and this will be the greatest addition। अगर हम माइनिंग और कोल सेक्टर में, दोनों माइनिंग है ऐसे, अगर हम ठीक तरह से काम करके हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव हम इस क्षेत्र में हम ला सकते हैं। थोड़ा कुछ पुश किया इस 2 बरस में मई आने के बाद। उससे पहले जो हमारा प्रेडेसेसर थे वो भी बहुत अच्छे प्रयत्न किया है, पीयूष जी गोयल हो या तोमर साहब हो। तो नया था ऑक्शन रिजिम। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी तक हमने 114 ब्लॉक्स अभी तक हमने ऑक्शन किया है, टोटल 114। तो ये 5-6 बरस में हमारा 114 हुआ है, और G4 लेवल में हम कर रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करता हूं, ये 100 ब्लॉक्स, और जैसे मध्य प्रदेश ने पूछा था, हमने उधर भी जीएसआई से ऑफिसर को दिया है। जहां भी अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इफ इट वांट्स एनी हेल्प और असिस्टेंस फ्रॉम अस,
वी आर रेडी टू प्रोवाइड इट। तो इसमें पार्टी, किसका पार्टी का सरकार है, इनका पार्टी का सरकार है, ये भी हमको कुछ संबंध नहीं है। ऑन माई ओन, ऑन initiative of the Ministry of Mines, we had discussion with राजस्थान गवर्नमेंट से, हमने चर्चा की। झारखंड को हम खुद जाके बातचीत करके आया और बाद में 2 बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने पूरा समय हमको दिया, मुख्यमंत्री जी राजस्थान, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश। ओडिशा से हमारा बातचीत कंटिन्यूअसली चल रहा है, लगातार चल रहा है। और जहां जहां पॉसिबल है, जो मुख्यमंत्री या मंत्री डिमांड करते हैं, उधर ही हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इरादा इतना ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मुझे डायरेक्शन ये था, भारत सरकार में माइन मंत्रालय का तो पॉलिसी बना दिया, बाकी सब वो करते हैं, जो होता है नसीब के ऊपर छोड़ देते थे। लेकिन अभी मोदी जी का सोच ऐसा नहीं है। 2014 में आने के बाद जो देश का मिनरल पोटेंशियल है, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, बिकॉज दिस विल ऐड। अगर हम आयरन ओर माइन करते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, कितने लोगों का भला होगा। सस्टेनेबल माइनिंग करके अच्छे हम स्टील इंडस्ट्री लगाते हैं। स्टील एडिशनल सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं इधर। अभी हमारा राइटली और रॉन्गली चर्चा चल रहा है, हमारा ओर कम हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो तो अलग बात है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। बट ओवरऑल हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं क्या। दुनिया में माइनर एक कंसेप्ट है, माइनर मिनरल्स का एक, सॉरी माइनर मिनरल्स का नहीं, ये जूनियर मिनरल्स माइनर्स, जूनियर माइनर्स का एक कल्पना है। व्हाट डिड दे डू, वो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके, आई एम नॉट टेलिंग दैट एंटायर दैट सिस्टम हैज टू बी फॉलोड, बट उसमें जो अच्छा है विथ ऑक्शन, हम क्या कर सकते हो सोचना चाहिए। नया सोच के साथ आप अगर भारत सरकार को, माइन मंत्रालय को विथ ऑक्शन, ऑक्शन के रिजीम में, ऑक्शन के सिस्टम में क्या बदलाव लाना सकते हैं, ये तो हम सब मिलके सोचना चाहिए। अदरवाइज जो दुनिया आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता है। हमारे पास बॉक्साइट है, फिर भी हमारा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, हमारा एल्यूमिनियम ये क्या चल रहा है, आप सबको मालूम है। तो हमारा इतना बड़ा बॉक्साइट होते ही अभी तो आंध्र प्रदेश में एक इंडस्ट्री बंद हो गया हमारा, मीन्स जो चालू होने का था वो भी बंद हो गया। तो इसलिए मैं आग्रहपूर्वक आपको कहना चाहता हूं, और एटीट्यूड एंड अप्रोच आप बदल, अगर इफ यू डिसाइड एंड चेंज इट, अल्टीमेटली हम कभी कभी देखो, मैं आई एम नॉट टेलिंग दैट स्टेट गवर्नमेंट्स व्हाट दे आर डिमांडिंग इज रॉन्ग। ऑक्शन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए हम कितना दे रहे हैं, 5 करोड़ 3 करोड़, आलोक जी इतना दे रहे हैं ना अभी। हाँ, तो इतना हमको पूछने के, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस स्मॉल अमाउंट टू अस, इफ यू पुट मोर माइंस इनटू ऑक्शन, you will get thousands of crores. जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी कह रहे थे 6,000 crores is their target.
लेकिन हम जल्दी ऑक्शन में नहीं लाते हैं, क्योंकि ऑक्शन का डॉक्यूमेंट्स करना पड़ता है, तो उसमें लिए थोड़ा कुछ काम करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा विनती है, थोड़ा रिस्क लेके काम करिए विथ ए गुड इंटेंशन। हम काम करते हैं तो जरूर हम इसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने बहुत बदलाव इसमें लाया है और आगे भी ला रहे हैं, और कुछ भी माइंस एंड मिनरल सेक्टर में हम बदलाव ला रहे हैं। और ये बदलाव के समय में भी हमारा ऑफिसर्स, सेक्रेटरी, उनके टीम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब एंड दे विल कम टू यू ऑल्सो फॉर योर ओपिनियन। कभी कभी ऐसा होता है कि राज अपना कमेंट्स भी नहीं भेजते हैं, बाद में जब डिसीजन लेते हैं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। मैं सभी राज्यों का नहीं कह रहा हूँ और किसी पार्टी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। इन जनरल कई राज्य ऐसा है, भेजते ही नहीं। तो और कुछ बदलाव हम लाने का सोच रहे हैं। अभी मैं उसका डिटेल में जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक इसका पूरा कंसेप्शलाइज नहीं होगा तब तक हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक इन अनदर 2 weeks वी कैन पुट इट फॉर स्टेट कमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स कमेंट्स। इसलिए आप तभी पूरा माइंड अप्लाई करके आप अपना सजेशन हमारे पास रखिए। हम आपके पूरे साथ खड़े होंगे। कुल मिलाकर एज ए कंट्री, एज ए होल, जहाँ भी पोटेंशियल है वहाँ हम सस्टेनेबल अच्छे माइनिंग करेंगे। जहाँ अच्छे माइनिंग होता है वो इंडस्ट्री भी आता है। If you keep the atmosphere good, positive atmosphere as far as investment is concerned, if you put a positive atmosphere, few years back you just imagine, few decades back, बेंगलुरु में जब विद्यार्थी था तब से मैं बेंगलुरु जाता था। देखते देखते इट बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द ऑलमोस्ट वर्ल्ड। वही थोड़े कुछ अधिकारी और तब के सरकार कुछ पॉलिसी में बदलाव लाया और पीसफुल एटमॉस्फेयर रखा, बेंगलुरु इंटरनेशनल सिटी बन गया। बेंगलुरु इवन इट वाज नॉट कंसिडर्ड बिफोर एज ए मेट्रो सिटी ऑल्सो, ओनली चेन्नई एंड दिल्ली, मुंबई ये मेट्रो सिटी ऐसे बोलते थे। लेकिन ये सब मेट्रो सिटी के वही लेवल पे आज बेंगलुरु इज ग्रोइंग, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वन ऑफ द वेरी पोटेंशियल स्टेट, उनका कर्नाटक का बजट ही आई थिंक 2,50,000 crores है आज। तो इसीलिए एक बार हम निर्णय करके इसमें बदलाव लाते हैं तो ये सेक्टर में भी, जहां फॉर एग्जांपल झारखंड है, और आई एम नॉट टेलिंग दैट दे आर नॉट डूइंग और नॉट डूइंग, आई एम जस्ट टेलिंग दैट सिंस दे आर मिनरल रिच स्टेट आई एम टेकिंग देयर नेम। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ प्रोएक्टिव होके, मध्य प्रदेश हम काम करते हैं तो एक क्षेत्र में हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। अंत में मेरा निवेदन है, एनमेट का पैसा हम सिस्टमेटिकली बट लिबरली वी आर रेडी टू गिव, एम्पैनल द प्राइवेट पीपल एंड गेट एक्सप्लोर्ड। रिपोर्ट ले लो तो तब आप इमीडिएटली वो रिपोर्ट हमको भेजते हैं तो हम ऑक्शन के लिए आपको परमिशन दे देंगे। ब्रिंग मोर पीपल फॉर एक्सप्लोरेशन। जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन हमारा होता है आपको सुविधा होता है। और इसमें G4 में भी हमने जो दे रहे हैं, इसमें एग्जिट पॉलिसी भी वेरी क्लियर है।
अगर आप समझते हो जो G4 लेवल पे ऑक्शन में लिया, देन इफ ही फील्स दैट दिस इज नॉट वायबल, डाटा सबमिट करो, चले जाओ। यही है ना आलोक जी, सिंपल, जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल हम किया है, आगे भी करने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार मैं प्रधानमंत्री जी का आग्रह लेके, उनका मार्गदर्शन लेके मैं आपको कह रहा हूं, एक दिस सेक्टर कैन ऐड ए वेरी बिग थिंग टू जीडीपी। हमारा अभी 2% भी पूरा नहीं है जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन। तो अभी हमने टारगेट रखा है 2.5, तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी होने का थोड़ा कष्ट लगा, इसलिए अभी 2.5 रखा है। इफ ऑल टुगेदर एज ए टीम, जो इधर ऑफिसर बैठे हुए हैं और मंत्रीगण ज्वाइन हुआ है, ये सब मिलके हम इस क्षेत्र में बदलाव लाने का निर्णय करते हैं। डिसीजन मेकिंग फास्ट करना, ऑक्शन में जल्दी लाना, और आगे हम ये भी सोच रहे हैं कि हम कोयला में किया है, कोयला में अगर सिर्फ 2 बिड्स आते हैं, सॉरी 1 बिड आते हैं, तुरंत हम सिर्फ फिर एक बार वो ऑक्शन में लगाएंगे। ट्रीटिंग वो सिंगल बिड का वो डिस्कवर्ड प्राइस ऐसे समझ के विल गो फॉर द ऑक्शन। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ, एंड नेक्स्ट टाइम अगेन इफ सिंगल बिड कम्स ऑल्सो वी आर अलोकेटिंग दैट। ऐसे इसमें भी हम थोड़ा, हमारा सोच चल रहा है। तो इसलिए मैं बार बार, मेरा आग्रह यही है, एक तो जल्दी ऑक्शन में लाइए। कभी कभी हमारा सोच रहता है ऑक्शन हमको अलॉटमेंट थ्रू हमारा कारपोरेशन को दे दो। वर्किंग माइंस जो ऑलरेडी वर्किंग है, एक्सपायर हो रहा है, ये सब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम अलॉटमेंट रूट से हम नहीं देंगे। ओनली ओरिजिनल माइंस 1 और 2 एक्सेप्शनली हम दे सकते हैं, बाकी सब हमको ऑक्शन में जाना है, क्योंकि सरकार का एक लिमिटेशन है, हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरकार का कितना भी हम कोशिश करते हैं, तो हमारा वी हैव गॉट आवर ओन लिमिटेशन, तो इसलिए वी कांट डू इट। बिजनेस का करने का एक तरीका भी रहता है। So bring more people into exploration, bring more people into the mining. इसके आगे भी हम जो कुछ भी हमने अभी किया है, इसके आगे भी हम अमेंडमेंट शायद नेक्स्ट सेशन में, नवंबर में जो सेशन होगा उसमें हम फिर से ला रहे हैं। उसमें बहुत इजी माइनिंग, सस्टेनेबल माइनिंग, पर्यावरण का भी ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल माइनिंग कैसे हो, ये भी हम कर रहे हैं। और विद इन नेक्स्ट वीक वी आर ऑल्सो होल्डिंग ए मीटिंग विथ द मिनिस्टर ऑफ माइंस, सॉरी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। हमारा कुछ, आपने जो कुछ इशू उठाया है उसके भी हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से बात कर रहे हैं। उसका डिटेल मैं अभी देना नहीं चाहता हूं, दैट ऑल्सो वी आर वर्किंग इट आउट। तो ऐसे सब कुछ हम सोच रहे हैं, आपका मुझे मदद चाहिए। अल्टीमेटली देखिए, इफ स्टेट डजंट कोऑपरेट, सेंट्रल कांट हेल्प, बिकॉज पुलिस आपके पास रहता है, लैंड आपके पास रहता है, पानी आपके पास रहता है। अल्टीमेटली सी, हम ये फंक्शन कर रहे हैं इधर बैठ के, तो हमारा माइन का मंत्रालय का बजट भी कम है, उसमें हम खर्चा करके करना पड़ता है इसको। एक नया पैसा आप
हमारा ब्रिजेंद्र कुमार जी कल जाके ऑक्शन करते हैं, उनको परसों से कुछ पैसा मिलता है, 1 पैसा भारत सरकार को नहीं मिलता है। फिर भी हम आग्रहपूर्वक ये काम करने के लिए आपको कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली it will add to the wealth of the country, and if it is added to the wealth of country, then only we can serve the poor people. This is the commitment of Shri Narendra Modi. I appeal to you, be proactive, जबरदस्त थोड़ा धक्का लगा के काम करिए. Government of India is with you, and we will see that all put together कम से कम हम 2.5% तो कम से कम ऐड करने का कोशिश करेंगे. यही आशा करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी, स्पेशली 3 मंत्री कर्नाटक से, हमारा हालापाचारी जी जो हमारा मंत्री है और हमारा अच्छे मित्र भी है, मैं भी कर्नाटक से हूँ, और ब्रजेंद्र कुमार जी और जानकी राम जी इधर फिजिकली इधर आए हुए, उड़ीसा के मंत्री ज्वाइन हुआ है वर्चुअली, और कई हमारे डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज्वाइन हुआ है. उन सब के मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद समर्पित करते हुए फिर से एक बार मैं आग्रह करता हूं, जो कुछ भी आज हैंडओवर हुआ है उसका तुरंत ऑक्शन प्रोसेस में लाइए. एंड फॉर एनी असिस्टेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विल स्टैंड बाय यू. विथ दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच. Well, thank you very much, sir. Your words of encouragement, in-depth knowledge of state of affairs and contribution to today's occasion proves what we already knew, that you are a strong team player and a connoisseur of excellence. Well, skills can be imparted, but the will to perceive and persevere is inborn, a talent you have been blessed with. Ladies and gentlemen, we have come to the final segment of today's release ceremony, today's occasion rather, and that is to do with Thanksgiving. Making adequate preparations for an important event like this requires a lot of preparation, hard work, planning, time management, and above all, malleability to adapt to sudden changes. Understandably, all this needs to be acknowledged, all this needs to be given due consideration for a befitting conclusion. For the same, may I now request Shri R.S. Garkal, Director General, Geological Survey of India, who is now steering the aspirations of the great organization Geological Survey of India at its hem of its affairs and giving it the desired direction to lead it, desired impetus to lead it in the direction that we are looking for. May I request, sir, to kindly come forward and propose a vote of thanks. आदरणीय मंच एवं उपस्थित अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सबका नमस्कार. जय भारत. कहा जाता है कि अच्छा समय क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है. हर अच्छी घटना का अंत निश्चित है. आज का ये समारोह भी कोई अपवाद नहीं है. अब हम इसके अंतिम क्षण में आ चुके हैं. ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का मौका दिया गया. मैं अति गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ. निसंदेह आज के कार्यक्रम के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में 100 G4 ब्लॉकों को नीलामी हेतु संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा जाना एक मील का पत्थर साबित होगा तथा देश निरंतर समृद्धि एवं खुशहाली के रास्ते पर अग्रसर होगा. इस परम उद्देश्य को सफल बनाने हेतु मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे माननीय खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से चंद क्षण
हम लोगों के लिए निकाला तथा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनना स्वीकार कर हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानित अतिथि माननीय खान राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी का, जिन्होंने वीसी के माध्यम से जुड़कर हमें संबोधित कर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। आज हमारे बीच मंच पर आसीन बिहार, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य के माननीय खाद्य मंत्री उपस्थित हैं तथा उड़ीसा के माननीय खान मंत्री वीसी से जुड़े हैं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति एवं संभाषण से इस कार्यक्रम की शोभा निश्चित रूप से बढ़ी है। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रियों के पीएस एवं ओएसडी साहिबानों का उत्तम समन्वय बनाए रखने हेतु आभार प्रकट करता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे खान मंत्रालय के सचिव श्री आलोक टंडन साहब का, जिनकी देखरेख एवं कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हुआ। साथ ही खान मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी श्री संजय लोहिया जी, समस्त जॉइंट सेक्रेटरीज, विशेषकर श्री उपेंद्र चंद जोशी जी एवं सभी पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं केंद्र एवं राज्य सरकार के संस्थानों का, उद्योग एवं संगठनों का तथा अन्य हितधारकों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके मुखिया या प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित है अथवा वीसी के माध्यम से या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े हुए हैं। इनमें से प्रमुख मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, फिक्की, एसएल माइनिंग, एनएमडीसी, सीआईआई, वेदांता, टाटा स्टील, माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन, फीमी, एमईसीएल, बीजीएमएल, एचसीएल, नाल्को, एसोचम, केएसएमसीएल, आईबीएम, राज्यों के भूविज्ञान एवं खान निदेशालय तथा खुद मेरा विभाग जीएसआई, आप सभी की भागीदारी से इस कार्यक्रम के उद्देश्य को शक्ति प्राप्त हुई। आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों एवं रिपोर्टरों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को भरपूर कवरेज देकर जनमानस तक पहुंचाया। अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु गठित ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने फिक्की के साथ मिलकर आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। पुनः सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।
Well, बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय, and with the permission of the chair, we'd like to bring to an end the proceedings of today's program. I also request our revered dignitaries on the dais and all present in the auditorium to kindly join us for tea and light refreshments being served in the adjacent hall to this. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being a part of this program. Thank you.